everyone. Good evening. I welcome you all on LegalEdge After College YouTube channel. So today in this session, we will be discussing expected MCQs for University of Delhi LLM entrance examination from Law of Torts. All right, this is the sixth video in the series. So we are like running a crash course series here for upcoming DULM entrance examination, जो कि होने वाला है 17th of October को. Good evening, Priya. Hi, Bilal. Hi, Henry. I believe you all are doing good and you all are excited for this particular session. So we will be discussing 15 questions from Law of Tort in this particular session. Now, so first question of the day is the maxim respondent superior means. What does it mean? So as we always do that you have to write answers in the comment box. What is the answer of question number one? Hi Bilal, good evening. Hi Sayed, good evening. Hi Henry, good evening. How are you all? Okay, Lakshmi, Priya is saying 1 ka B. What about others? Shivam is saying B. All right. What about Henry, Bilal, Nazim B, Aman B? All right, all right. Uh, Krati Butts. It's not D. Answer cannot be D. The correct answer is B only. Okay? Why? What we are talking about here? We are talking about the maxim of respondent superior, right? Respondent superior. What does it mean? It means let the principal be held liable. Let the principal be held liable. Okay? Let the master answered. इसको ये भी बोलते हैं कि जो master है वो answerable होगा. Let the master answers. ये answered. इसके relation में आपको like when we study about when do we study about this respondent superior concept? We study about that when we study about the relationship between master and servant or relationship between employer and employee. All right. Now there are two case laws which are important in this respect. Let's discuss those case laws. I'm just telling you the names. If you think that आपको पढ़ना चाहिए, you can Google it and just study them. The first case law is automobiles transport versus Devalal, Devalal and others. All right. And next case is Srimati Savita Garg versus the director of National Heart Institute. The director of National Heart Institute. All right. So the correct answer is B only. Now, next question. So next question here is the doctrine of vicarious liability applies when there is. तो vicarious liability का जो doctrine है वो कब applicable होगा? When the relationship is of principal and agent, when the relationship is of partners, when the relationship of master and servant, and all of the above. What is the correct answer of question number 2? Ambitious Anu is saying D. Krati Butts is saying D. Nazim is saying D. Shubham is saying D. Yes, correct answer is D. So why? Because we are talking about vicarious liability. ठीक है? We're talking about vicarious liability. Vicarious liability को हम imputed liability भी कहते हैं. It is also known as imputed liability. All right? And यहाँ पे like what exactly it means, तो legal responsibility of one party, एक पार्टी की legal responsibility दूसरे के एक्शंस को होल्ड करती है. ठीक है? इन वाइकेरियस लायबिलिटी तो जो भी रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट का होता है, पार्टनर्स का होता है, मास्टर सर्वेंट का होता है, ये सारे वाइकेरियस रिलेशनशिप्स हैं. ऑलराइट. एंड ये भी बताओ कि जो वाइकेरियस लायबिलिटी है ये प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल होता है या सिविल लॉ में या दोनों?
A, B, C. इसका आंसर दो जल्दी से. I'm asking that ये जो vicarious liability का principle है, it is applicable on criminal liability, civil liability or in both the context, in both the laws, civil law, criminal law, or in both. Bilal is saying both. Deepanshu is saying both. What about others? Shruti, Aman, Henry, Lakshmi, Arina. All right. Yes. So it is applicable in both the liabilities. All right. इसमें एक लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज होना जरूरी है. दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज होना जरूरी है. ठीक है. यस यस दीपांशु, देयर इज अ मैक्सिम एज वेल. ठीक है. नो, Faraz, it is applicable in both civil and criminal liabilities. ठीक है. Now, question number 3 here says, in the wrong of negligence, there is a breach of. Wrong of negligence में breach किसका होगा? Legal duty of the defendant का, legal rights of the defendant का, of good faith का या none of the above का? What is the correct answer of question number 3? We're talking about wrong of negligence here, right? Wrong of negligence, जिसे हम और क्या बोलते हैं? We also call wrong of negligence wrong of carelessness. ठीक है. लीगल सेंस में हम इसे केयरलेसनेस भी बोलते हैं. All right. Okay. Deepanshu is saying D, none of the above. Ambitious Anu A. Aman A. All right. Henry A. Okay. So correct answer here is A. Legal duty of the defendant का breach होता है. ठीक है. Negligence is the breach of legal duty caused by the omission. ठीक है. In negligence, ये लीगल ड्यूटी होती है, ये ब्रीच कैसे होती है? कॉज्ड बाय द, या तो ओमिशन टू डू समथिंग, जो आपको करना था आपने नहीं किया है. ठीक है. omission to do something which a reasonable person would do, or an act which prudent and reasonable person would not do. ठीक है. तो ऐसा कोई एक्ट जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया है, या ऐसा कोई एक्ट जो आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन वो आपने किया है. ऑल राइट. नेक्स्ट. So next question here is, objective theory of negligence was given by. Who gave the objective theory of negligence? Is it Salmond? Is it Austin? Is it Holland? Or is it Pollock? Objective theory of negligence was given by which jurist? Question number 4. Okay, yes. So most of you are giving the correct answer. Here the answer is Pollock. Bilal, you said salmon. Shishir, not. Salmon is not the correct answer. Pollock is the correct answer. Objective theory of negligence has been given by Pollock, जिनका पूरा नाम था Frederick Pollock. Frederick Pollock. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है that like ऑप्शन में Pollock की जगह Frederick Pollock भी हो सकता था. Alright, so आपको वहां पे भी आंसर डी ही लगाना था. ठीक है. Now, next question here is, the standard of care required on the part of defendant in the tort of negligence is of. जो tort of negligence में standard of care required होती है, ठीक है, defendant के part से, ठीक है, वो क्या होती है? highly skilled person की, any person of least understanding की, a reasonable and prudent man की, a person having legal understanding की. So what is the reasonable care required या standard of care required in case of negligence? Though these questions are a little easy, however, ऐसे ही सवाल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं. सो आई पिक्ड these questions considering the
previous year question papers. All right. What is the answer here? All of you answering C. Yes, correct answer is C only. That is the standard of care required on the part of defendant in the tort of negligence is a reasonable and a prudent man. All right. Care is of reasonable and a prudent man. Okay. Now, next question here is the rule regarding the principle of negligence was laid down in the leading case of. तो ये जो negligence का rule है, ठीक है, law of tort में जो rule of negligence है या rule regarding the principle of negligence है, it was laid down in which particular case? Glasgow Corporation versus Munir, Dunnock versus Stevenson, Winterbottom versus Wright, Ishwari Devi versus Union of India. Shishir here is requesting to bring a session on company and labor law. We already have arranged a session in a very like in coming 2-3 days. You're going to get a session uh, on company law and other things you have requested. All right. So जो रूल है प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस का ये लेट डाउन हुआ था इन विच केस इन डुनॉक वर्सेस स्टीवेंसन. ठीक है. इस केस को हम द स्नेल इन द बॉटल केस के नाम से भी जानते हैं. सबने पढ़ा होगा अपने लॉ कॉलेजेस में द स्नेल इन द बॉटल. ठीक है. काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके केस. ठीक है. एंड दिस केस वाज डिसाइडेड बाय 3:2 majority. ठीक है. And yes, Bilal, that was the point I was about to mention, that decided by Lord Atkin. ठीक है. लॉर्ड अटकिन ने ये डिसीजन दिया था. ठीक है. इसे हम द स्नेल इन द बॉटल केस भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन ऑफ हार्म which he has exposed himself with knowledge and free will refers to. A person cannot complain of harm. A person जो ठीक है जिसने अपनी फ्री विल के साथ अपने आप को एक्सपोज किया है वो उस हार्म के लिए कंप्लेन नहीं कर सकता. ठीक है. अगर उसने फ्री विल से एंड नॉलेज के साथ अग्री किया है उस हार्म के लिए तो व्हाट डज इट मीन? वॉलेंटी, non-fit injuria, act of God, inevitable accident, ex turpi, quasi-non, orator action. Okay, all of you are answering as A. Yes, the correct answer here is voluntary not fit injuria. But I always say, अगर कुछ और पता है क्वेश्चन के बारे में तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो. ठीक है. Now, वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया का मतलब ही ये होता है. सो दिस इज अ लैटिन लैंग्वेज. इसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन इट इज नॉट अ रॉन्ग. टू अ विलिंग पर्सन it is not a wrong. Yes, absolutely right, Dipanshu. So Dipanshu here is mentioning 87, section 87 of IPC. ठीक है. वहां पे भी कुछ इसी तरीके की बात की गई है. ठीक है. To a willing person, it is not a wrong. Okay. Now, question number 8 here says liability in tort depends upon. tort में law of tort में जो liability है वो किस पे depend होती है? Quantum of damage suffered, involvement of mens rea, infringement of legal right, effect on public. What is the answer of question number 8? Lakshmi Priya is saying C, Nazim is saying C, Krati is saying C, Bilal is saying C. Yes, answer is C only. टॉर्ट में ठीक है जो लायबिलिटी है वो लीगल राइट्स के इन्फ्रिंचमेंट पे डिपेंड करती है. ठीक है. आपके जो लीगल राइट्स हैं वो कितने इन्फ्रिंच हुए हैं इस पे डिपेंड करती है लायबिलिटी इन टॉर्ट. ठीक है. लायबिलिटी इन टॉर्ट जनरली डिपेंड्स अपॉन समथिंग डन बाय मेन which can be regarded as a fault for the reason that it violates another man's right. ठीक है. क्योंकि उसने दूसरे पर्सन के राइट को वॉयलेट किया है. बट लायबिलिटी में ऑल्सो अराइज विदाउट फॉल्ट. अब इन टॉर्ट क्या बिना फॉल्ट की भी लायबिलिटी अराइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. उसको क्या बोलते हैं? व्हाट दैट काइंड ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड व्हिच अराइजेस
without the fault of other person. हम क्या बोलते हैं? Absolute and strict liability. All right. Now, next question. It says the principle facts speak for themselves. ये जो principle है, facts speak for themselves is expressed by a maxim. कौन सा maxim? ये particular principle को express करता है. Facts speak for themselves. UB just ibi remedium, res ipsa locator, novus actus intervening, quasi causans. Question number 9. Okay, everybody is answering B, that is less res ipsa locator. That is the correct answer. कोई मेरे को बता सकता है res ipsa locator का जो provision है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन कैरी करता है या कौन से सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में रेस इप्सा लोकेटर का जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्रेस किया गया है? एनीवन? वन? सो आई एम आस्किंग, रेस इप्सा लोकेटर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इट इज एक्सप्रेस समवेयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट. इफ सो, इन विच सेक्शन it is expressed? Can you quote a section here? Yes, Ankita, the answer is B. I'm talking about Indian Evidence Act का section जो इसके बारे में बात करता है. All right, so now this is your homework. सर्च करता भी है क्या कोई इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन इस बारे में बात, और अगर करता है तो कौन सा वो सेक्शन है जो इस बारे में बात करता है? All right, now you be just a remedium. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है where there is law there is remedy, या हम बोल सकते हैं where there is right there is remedy. All right, this is you be just a remedium. ठीक है. All right, Shishir is saying 106, Shruti is saying 6. Okay, just cross check it once and write in the comment box. All right, now novus actus intervene. इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है new intervening act. New intervening act. ठीक है. causa causans का मतलब होता है, causa causans का कोई बता सकता है what is the meaning of causa causans? श्वेता, विवेक, श्रुति, नसीफा, दीपांशु, शिशिर, अंकिता. What is the meaning of quasi causans? Bilal. Yes. So Lakshmi Priya answered it correctly. इसका मतलब होता है the immediate cause. ठीक है. Quasi causans का मतलब होता है the immediate cause. All right. Now, question number 10 says, what is meant by the term actionable per se? Actionable per se का क्या मतलब होता है? Actionable without proof of damage, actionable at the instance of an injured party only, actionable only in civil courts, a tort of strict liability. What is the answer of question number 10? Okay, 27 people are online right now. I have just received 13 likes. Like, if you don't like the sessions, then you can put your suggestions in the comment box. Okay, we'll consider your suggestions, right? But if you like the session, you have to like it.
because that keeps me motivated to bring more and more such sessions for you people. All right. Okay, here I'm getting mixed answers. When it comes to question number 10, some of you are answering B, some of you are answering A. So we are talking about actionable per se. ठीक है, actionable per se. Actionable per se का क्या मतलब होता है? ठीक है, actionable per se का मतलब होता है that you don't have to prove that you suffered loss or damages. जब किसी ऐसे एक्शन, ऐसा कोई एक्शन जहां पे आपको ये प्रूव नहीं करना होता है suffered that you suffered loss or damage. आपको ये प्रूव नहीं करना है कि आपने क्या लॉस या डैमेज को सफर किया है. ठीक है, से बोलते हैं हम एक्शनेबल पर से. आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है, विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज. आप बिना डैमेज प्रूव किए जब एक्शन ले सकते हो, जिस एक्ट का एक्शन आप बिना डैमेज प्रूफ किए ले सकते हो, उसे हम बोलते हैं एक्शनेबल पर से. ऑलराइट. लेबल, ठीक है, डॉट में आपने लेबल पढ़ा है, आपने आपने पढ़ा है स्लेंडर. ठीक है, ये क्या है? दीज आर एक्शनेबल per se claims. ठीक है, so the claims where you can take the actions without proof of damage is called actionable per se. All right. I hope you people are understanding the concepts as well while solving the questions. Now, question number 11 here says, which of the following is not a defense to trespass to the person? अगर कोई पर्सन ट्रेसपास करता है तो उसके लिए क्या डिफेंस नहीं है? वन मोर थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल, जैसे ही एडमिट कार्ड्स आएंगे, ठीक है, DU LLM के एडमिट कार्ड्स आएंगे, काइंडली लेट अस नो, एंड you can let us know by putting a comment in the comment box of YouTube, or you can ping us or drop a message on Instagram. So you all know that LegalEdge After College is there on the Instagram. I believe आप सब follow करते हो. वहाँ पे भी you get a lot of relevant information related to LLM entrance examinations, right? तो आप Instagram पे मैसेज करके भी बता सकते हो कि एडमिट कार्ड्स रिलीज हो गए हैं. ठीक है. And one more thing, there's a okay, exam city release हो गई हैं, तो very soon you are going to get the admit cards as well. Kindly let us know. One more thing, as you people are my students, right? Our students, Legal Edge After College team students. I want you people to do very good in the examination. All right. So right now 26 students are online, and I believe आप लोगों ने सारे जितने भी crash course में videos हैं, ये सारे देखे हैं, ठीक है? And other videos also. So we are like running this series of DOLLM entrance examination since long, because काफी time से date delay होता जा रही थी, right? So now I have done my part, right? I am doing my part. I will be doing in near 2, 3, 5 days. I'll be doing my part. I will be teaching you. I will be teaching you like from the core of my heart, as I always do. But it's your responsibility to perform well in the exam, and at the same time to give us the results. All right. So we actually cumulatively हमने बहुत पढ़ा है, बहुत discussion किया है. So this is a YT community, right? YT family of mine. You all are my students, right? So we are somewhere or the other. I know your names, right? So it's like there's a connect between us. So what I want from you people, if you're going doing good in the exam, you're getting ranks, let us know. Let us know that how you performed, how our videos help you in your preparation and all those things. So we expect just that little gesture from your end. And so that's it. And prior to that, exam result तो बाद में आएंगे. Exam में एकदम calm रहना है, as I always say. So I'm going to come up with a session on that. But here, as many of you are online right now, so I just want to discuss this. Keep calm, like keep calm. Do not hustle. Do not think much. Just sleep well before 1 day before your exam, right? Sleep well and read the question properly. A lot of times, sometimes
I come up with a question on YouTube where I put not in the question, or sometimes it is asking untrue, and you read as a true. Later, you say in the comment box, "Ma'am, sorry, मैंने not पढ़ा ही नहीं." So why we have done a lot of series? जितनी भी mistakes करनी थी ना, आपने lives में कर ली है. Legal Edge after college के जितने भी lives हुए हैं, वहां पे आपने कर ली है. बट now it is at time कि आप अपने real exam में कोई भी mistake ना करो. ठीक है? You're not supposed to make any mistake. All right? And जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं, डू लेट अस नो. एट द सेम टाइम एग्जाम देने के बाद एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल था, कहाँ से ज्यादा सवाल पूछे गए थे, क्योंकि ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है. ठीक है, सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो पेपर तो नहीं मिलेगा, बट आप आके बता सकते हो हमें. ठीक है, चलो. Come back on the session. Here we were discussing question number 11, which talks about which of the following is not a defense to trespass to a person. ठीक है, डिफेंस टू ट्रेसपास क्या नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है, सेल्फ डिफेंस नहीं है, नेसेसिटी नहीं है. So Deepanshu answered B, Yashika B, Krati Vats B. All right, all right. Shruti Singh, ma'am, thanks for doing efforts for us. Thank you so much for joining our session and liking them, and actually telling your friends to watch our channel and everything. So thank you so much, Shruti, and for appreciation as well. Okay, question number 11. देखो, यहाँ पे मैं पूछ क्या रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि डिफेंस टू ट्रेसपास, ठीक है, नहीं है किसी पर्सन के लिए. लॉफुल अथॉरिटी, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, सेल्फ डिफेंस एंड नेसेसिटी. अब नेसेसिटी कैसे एक डिफेंस हो सकता है ट्रेसपास का? सी, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो एज अ डिफेंस सिर्फ तब अवेलेबल होता है. सो लॉ ऑफ टॉर्ट में कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज अवेलेबल एज अ डिफेंस ओनली in the case when the plaintiff himself contribute to the loss or injury. जब plaintiff contribute करता है loss के लिए या injury के लिए जो उसको suffered हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफेंस नहीं हो सकता trespass का. ठीक है, क्या नहीं है? ठीक है, however it cannot be pleaded as a defense in order to commit a trespass to a person. ठीक है, and contributory negligence को आप as a ट्रेसपास के टाइम पे आप एज अ नेग्लिजेंस नहीं बता सकते हो. तो आंसर क्या होगा? बी. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नो फॉल्ट लायबिलिटी मीन्स, नो फॉल्ट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? इज इट लायबिलिटी फॉर डैमेज caused through negligence? Is it liability for damage caused through fault? Is it absolute liability even without any negligence or fault? Is it freedom from liability? What is the answer of question number 12? नो फॉल्ट लायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? ओके, Ankita is asking कि ma'am, can you say what will be the safe score? Let the exam like end, no? Let the exam happen and then only we'll evaluate, Ankita. This is the time to study. This is not the time of speculation, right? As I always say, अभी जो वक्त है, इस वक्त में सिर्फ पढ़ाई करो. ठीक है? Do not think about score. Do not think about where you're going to end up, which college you're going to get. Don't think about those things right now. ठीक है? नो फॉल्ट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर. एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवन विदाउट नेग्लिजेंस और फॉल्ट. नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी. ठीक है, इवन बिना नेग्लिजेंस के या बिना फॉल्ट के. ठीक है, दैट इज नो फॉल्ट लायबिलिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉर्ट आर ग्राउंडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ. टॉर्ट्स जो है वो किसके कॉन्सेप्ट में आता है? लॉ के, कोर्ट के, राइट्स के या सिंसियरिटी के? क्वेश्चन नंबर 13. Yes, Dipanshu. So Dipanshu here is giving the additional information, which is very good habit. Like keep it up. Torts are grounded in the concept of
Okay, now I'm getting the mixed answers here. Few of you are answering B, few of you are answering C. Here the correct answer is C. ठीक है? तो torts are grounded in the concept of rights. ठीक है? तो law of tort का जो basic aim होता है, वो होता है to provide remedy for the breach of any right. ठीक है? तो law of tort का basic aim होता है to provide remedy for breach of right, the infringement of any right. ठीक है? So answer is going to be C. Now, question number 14 says, the landmark case of Tester Grammar School explain the principle of. Question number 14. Bilal, Arina, Shruti, Henry, Anu, Manish. Okay, okay. You're answering D. The answer of question number 14 is D. Temnum sine injuria. ठीक है, that's the correct answer, D. Now, सबको याद होगा ग्लूकोस्टम ग्रामर स्कूल में क्या हुआ था? एक पर्सन का एक स्कूल होता है, दूसरा पर्सन उसके पास में एक और स्कूल खोल देता है. ठीक है, तो जब वो स्कूल खोलता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया वाज एक्सप्लेन्ड. ठीक है, ये एक्सप्लेन किया जाता है. किसने एक्सप्लेन किया था? इंग्लिश कोर्ट ने. ठीक है, और कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था damages are caused to plaintiff without any legal injury, that is without breach of his legal right. ठीक है, such damages without breach of legal right, such damages are irrevocable. ठीक है, इसके फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं. अब एक और चीज होती है इंजूरिया साइन डेमनम. इंजूरिया साइन डेमनम. दिव्या, द आंसर शुड बी डी, नॉट ए. ऑलराइट, इंजूरिया साइन डेमनम क्या होता है? इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेजेस. लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज. बिना किसी डैमेज की जो लीगल इंजरी होती है, दैट इज इंजूरिया साइन डेमनम. यस कृति, ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस केस इज इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देख लेना. ठीक है, नाउ द लैंडमार्क केस ऑफ चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच डिफेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. कौन सा डिफेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट है जो है वो रिलेट करता है चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से? Yes, yes, you people are giving cases to injuria sine temnum. Keep it up, Shruti, Vivek, Abha, Anu. This is a good habit. Okay, question number 15. क्या आंसर होगा यहाँ पे? Most of you is answering C. It is related to private defense. It is related to B, that is private defense in law of tort. ठीक है, in law of tort, this particular case, Cherubin Gregory was state of Bihar is related to private defense. All right. In this case, the defendant used, defendant ने क्या किया था? Plaintiff versus defendant. Defendant ने क्या किया था? Defendant ने लाइव इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उनको एज अ डिफेंस, एज अ की ट्रेसपास, मतलब लोग उसकी जगह में ना घुस पाए, तो उसने यहाँ पे लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स लगा लिए थे. ठीक है, इसका ये डिफेंस था. ठीक है, हिज डिफेंस वाज दैट ही डिड नॉट एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. हाउएवर हिज प्ली वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट. इसका जो प्ली थी वो कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी बिकॉज हिज एक्ट वाज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि जिसका ये एक्ट था लाइव वायर लगाने का, ये जस्टिफाइड नहीं था, रीजनेबल नहीं था टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी. ऑलराइट, so that's it for this video. I'll come up with more such videos. Vivakshi ma'am will come up with
more such videos, right? The whole team of LegalEdge after college is trying कि आप DU LLM में बहुत अच्छा perform करो. Now it's your uh, like now it's your time. Now you have to perform well. You have to keep whatever we have suggested you. You have to keep all these things in your mind while like preparing for this exam in last few days and while attempting the exam. And I know that you all are going to come up with flying colors. You all are going to get this university for your LLM. Sure, Hazina, we will come up with company law ka video as well. Okay. So that's it for the session. Come, we'll meet again with more such sessions. Mikandari signing off.